So hey guys, thanks for joining. So today we have Vivek Mehata with us, and he has done quite a lot. And he is currently the head of marketing in New Tribe Capital, which is VC, and he takes care of growth hacking, content creation, brand building, and much more stuff. And he has been in the crypto space for quite a while now. So today the hot topic now is the crypto crash. So we thought we'd bring in an expert and you know uh, he could explain the situation. So hi Vivek. Hi, hi, hi. So nice meeting you, Ray, Yeah, I and think thank you for the introduction. yeah hi. Yeah, I think rather than me explaining, do you want to tell everyone about like your journey so far in this crypto world? Okay. So just a minute. Let's just start. Um, oh, just a minute, guys. Yeah. Amazing. Yeah, Uh, that was. yeah. Sorry for that, guys. That was Chandan just checking on me. Okay. We got amazing today. Cool. Well, So, yeah. okay. Before I begin, how are you guys doing? I see so many new guys. I mean, I'm just, I wait for this one day where I get to meet the BlueLearn community in real, and it is so fun to be here, believe me. Cyrus, hi man, hi. So, how many of you are, attending this session for the first time, or you are listening to me for the very first time who don't know who I am? Just ping me. Hi, Shenavaz, hi, nice to meet you again. Good to see you. Old friend. Yep, exactly. So how many of you guys are listening to me, for the very first time who don't know who I am and came out here out of nowhere? Just ping me up if there's someone new here. Okay, Dheeraj says it's my first time. Okay, don't worry. Ping in the chat box यार कोई कुछ नहीं बोलने वाला है तुम्हें कोई पहचानता नहीं है. Very first time. Okay. So let me give you a quick introduction of myself. Though I am Vivek Mehta, I am currently acting as the head of marketing at New Tribe Capital. It is a venture capital firm based in Dubai that invests in early stage crypto and blockchain projects. So what does it mean by investing in early stage? That means we invest into any project that even at its very seed stage before it is even before it even comes to the market or before any coin is listed. So we kind of get the tokens in forms of allocation at lesser price than that of the market, and that's how we invest in that. And post the launch, whatever, whether it goes to the moon, so that's our profit. Whether it crashes, so that's our loss. So that's what a venture capital does. Basically, that's what a crypto venture capital does. And that's about us. So my role here is a head of marketing and partnerships. So I look after basically here. There's nothing like B2C or B2B. There's always into corporate scenes. So I look after the partnership stuff where where we need to partner and talk to a lot of projects, where I need to break a lot of deals, convince a lot of people, negotiate probably thousands of times a day. So that's about my work. Sounds fun and fantasy, but it is not exactly like that. But yeah, that's about me. Okay, to give you a little bit of a background, so I have I have co-founded two of my startups previously. One of them we had shut it down. The other one I had an exit after working for 1 year and 4 months oddly. So I've been a growth hacker and marketer. I have basically my to talk about your interests. So I've been into I've done my mechanical engineering, but today I'm doing something totally out of the blues, which has nothing to do with engineering. But yes, that's about me. So after my engineering and even in my engineering days, I was involved with the startups, as I said. And after COVID came, I was one of part of the COVID batch. So after that, that was my second startup, which was going out
in there. And in the meanwhile, I was also working as a freelancer, and I got a chance to work with a lot of freelance, with a lot of crypto projects, particularly, and even multiple startups. So that's where I gained my experience from. Yep. I started rolling and rolling and rolling, and I got interested into crypto and blockchain. I was always a blockchain nerd. I had heard about it a lot of times. Then I started working with those projects. So I got to know about behind the tables how it works, and that was the time when I had an exit from my other startups, and then joined this company. And it's been a year. So I just completed my 1 year at New Tribe Capital day before yesterday. So yes, that's about me. I am also currently involved with. That's Yeah, yeah. Sorry. yeah, that's awesome. So I'm also currently working with Hello. one of the. Can you hear me, guys? Ray, can you hear me? Guys, you can hear me, right? Yeah. Cool, 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 cool. I think he dropped. Okay. So yeah, I am Sorry, also sorry. part. Uh, yeah, 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 no worries. I'm also a part of another upcoming startup. Basically, it's not a startup, it's an investment arm. It's a new venture capital firm which is being set up. It is already set up, by the way. It's been 3 months. So that's called Aswa Ventures. It's a Bangalore-based company named Aswa Labs, and Aswa Ventures is the investment wing of Aswa Labs. So yes, that's about it. Anyways, great. Yeah, great stuff. Also, congrats on 1 year in New Tribe Capital. So, think let's ask like one question that most people are asking right now is like, what happened to Luna crash? What was the whole scene there? hmm, so for the newcomers, I am not sure. My discussion is, it is going to be a little bit on basis of few of the concepts and assumptions that you guys know about crypto and blockchain, at least about the stock markets a bit. So I'm not gonna dive deep into that again. For that, go check out my other previous talks where we just discuss about the entire crypto market, what crypto is, Web3 is, all that stuff. Today we are here to talk purely about the crypto crash and why the markets are acting up like this. Okay, so let's just get into that now. How many of you remember the financial or the economic crash of 2008? Anybody? Bear market hasn't gone, okay, in long levels. Yeah, 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 you remember. So you might have watched that movie called The Big Short. What's the name of that actor in there? Christian Bale, I think, right? Christian Bale is the actor, right? Yeah, yeah, Christian Bale. Yeah, US financial crash, exactly. So that was an amazing movie, right? I mean, I was mind blown that when I saw that movie. So something similarly happened out there with this time's crypto crash. So see, before we go into this, let's just clear out few of the things. देखो भाई क्रिप्टो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ओके तो हर चीज के है ना कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है ओके बस ऐसा समझ लो कि इस बार कुछ लोगों ने ये जो नुकसान था इसका गलत फायदा उठा लिया ठीक है थोड़ा सा इसे और समझते हैं इसमें फायदा ऐसा है कि सी इट एज आई सेड इट इज डिसेंट्रलाइज इट गिव्स द अथॉरिटी टू द यूजर्स टू टू शेयर देयर डेटा विद समवन एल्स ओके टू लेवरेज इट so you get the full authority to that. So data privacy security is one thing, decentralization is another thing. So all of this has been used as a rivalry against what was going or what Luna did. So अब Luna के बारे में बात करते हैं. Let's go back in 2017. अब जो let's start from this one guy called Do Kwon. Now Do Kwon is the co-founder and CEO of Terraform Labs. So this guy he graduated from some university in South Korea. After that, he had done his previous startup, one of them, and uski baad bhi he had an exit from there. And but what happened was in this particular startup of his, he came to know about a company called Basis Market. I'm not sure how many of you have heard of that. But I'm damn sure none of you would have heard about this. Okay, this is this is out of the blues company. There was this company called Basis Market. So what they were doing was they were working on some kind of not algorithm, let's say, but they were working on a mechanism for stable coins. That's from where Dokwan got this idea about स्टेबल कॉइन अब स्टेबल कॉइन क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया लेकिन फिर से एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टेबल कॉइन्स आर बेसिकली दोज फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज विच आर pegged to a form of a stable currency like just as US dollars. Now USDT
is pegged to, or tether is pegged to the US dollar, USD. Okay. Now what does it mean that it is pegged? That means कि उसकी जो value है that will replicate the value of the actual US dollar. यानी कि if today you go to Google and check USD to INR, जस्ट गो एंड गूगल इट यूएसडी टू आईएनआर, तुम्हें पहले तो गूगल का एक चार्ट दिखेगा, फिर दो बॉक्सेस दिखेंगे, इट विल बी बेसिकली कन्वर्टोमीटर, है ना, एक कन्वर्टोमीटर होगा जिसके अंदर आप जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे उसकी वैल्यू करंट मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी. लाइक लेट्स अज्यूम दैट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ यूएस डॉलर इज 74 रुपीज एंड 50 पैसास. ओके, 74.5 रुपीज लेट्स से. तो इमीडिएटली द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ उसकी प्राइस ऑफ कोर्स और चेंज हो जाएगी, 74.6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी. तो ये जो वैल्यू वहां चेंज हो रही है ना, सेम वैल्यू चेंज होगी यहाँ यूएसडीटी में भी. सो दैट इज द एल्गोरिथम ऑफ यूएसडीटी तेथर. नाउ अब देखो दी व्हाट दे से, व्हाट इज दैट सेइंग, दैट नेसेसिटी इज द नीड, यू नो, इट इज अ फॉर इन्वेंशन, कुछ तो है ना, दैट इज सेइंग. सो दैट इज अबाउट द नेसेसिटी. अब यूएसडीटी आया तो हाँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. थैंक्स अक्षम फॉर कंप्लीटिंग में. सो अब यूएसडीटी आया तो लोगों को लगा यार ये एक ही क्यों होना चाहिए, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉइन्स. मतलब सिर्फ यूएसडीटी को ही हमने क्यों ये करना, व्हाई शुड वी रिलाई ऑन वन सिंगल स्टेबल कॉइन. यानी कि आउटर रियल वर्ल्ड में भी करेंसीज इतने सारे, देयर इज यूरो, देयर इज यूएसडी, देयर इज यू नो आईएनआर, हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है, करेक्ट. लेकिन फिर इनका मतलब मार्केट्स का कहना था कि हमने ये ऐसी क्यों, हमारी हर एक कोई अपनी अपना एक अलग स्टेबल कॉइन बनाने लग गया डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट लाइफ साइकिल और द इकोसिस्टम दैट दे वर क्रिएटिंग फॉर द ब्लॉकचेन. कोई सोलाना पे है तो उसका अलग कॉइन, कोई टेथर पे है, सॉरी कोई बिटकॉइन पे उसका अलग, इथेरियम पे अलग, हर कोई अपना अपना अलग एक स्टेबल कॉइन बनाने लग गया. And that's from where the stablecoin life cycle got in. Now slowly we are moving to the a criteria called as death spiral. ठीक है, just remember this word called death spiral. I'll tell you the analogy between, you know, what a death spiral is and how does that you know, analogically it is related to the 2008 crash. तो यूएसडीटी के आने के बाद काफी सारे स्टेबल कॉइन्स आने लग गए. सो अब ये सारे एक एक्चुअल करेंसी को पैक्ट है. सो व्हाट डोकॉन थॉट वाज कि यार ऐसी एक करेंसी होनी क्यों चाहिए जिसपे हम मतलब उसकी वैल्यू पैक करें. व्हाई नॉट टू क्रिएट अ स्मार्ट एल्गोरिथम. देखो अब मतलब ये स्मार्टनेस का भी स्मार्टनेस ला रहा था ये बंदा. ही थॉट कि हमने ऐसा मतलब व्हाई शुड वी पैक द वैल्यू टू द यूएस डॉलर ओनली. इट इंस्टेड इट शुड बी, यू नो, इट शुड बी एल्गोरिथमिकली ड्रिवन. उनका कहना ऐसा था कि एक एल्गोरिदम ही ऐसा बनाया जाए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिसके ऊपर यूएसटी, मतलब ये जो स्टेबल कॉइन नया आने वाला है वो वेरी करेगी. टेरा यूएसडी. नाउ टेरा यूएसडी आल्सो कॉल्ड एज यूएसटी, देयर ओन स्टेबल कॉइन, दे मेड अ स्टेबल कॉइन बैक्ड विद एल्गोरिदम. नाउ ये ऐसा समझो, दिस इज द लूप होल ऑफ blockchain development. यानी कि एरिया विच पीपल न्यू दैट इट शुडंट बी एक्सप्लोर्ड, और ऐसा अगर होता है तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल, बट ही मेड बिजनेस आउट ऑफ इट. अब देखो, I am no person to say that this was a planned or you know, coordinated scam, but we are just here discussing it liberally. तो थोड़ा लिबरली ओपनली डिस्कस करके देखते हैं, दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों देखते हैं कि वेदर इट्स दिस हैपेंड इंसिडेंट, मतलब coincidentally हुआ या this was planned. So let's decode it. Okay, what do you guys think, whether this was done coincidentally or it happened just, you know, just as a failure of the algorithm or the entire system? Planned. Okay, don't know, just curious about it. Saksham Patab. Okay, how many guys, what are your ideas? Just give me your ideas. What do you think, whether it was intentional or it happened just out of as a system failure, as an algorithm failure, whatever? Okay, I think it was a failure of algorithm. ठीक ठीक है. मे बी a system failure. ठीक है, system failure नहीं, actually loophole and token. या स्वरूप you are kind of near that. तो basically ये आंसर है ना, थोड़ा biased आंसर है. जितने सारे बोल रहे हैं ना सबका सही है. इंटेंशनल बाद में हुआ, पहले मतलब it came out of an intention when he realized that this is a loophole out of it. So it was all coordinated only in a way, you can say, कि उसे पता चल गया. बट फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. तो हुआ क्या ना, अब इसमें हर क्रिप्टो करेंसी अगर तुम देखो तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, व्हिच व्हाई पीपल आर अगेंस्ट इट. द रीजन इज
would love to witness the scam. Okay, so the reason is, देखो scams में मतलब sorry मैं scams बोल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसीज में होता क्या है यार, lot of people are against it because it has got no actual asset backed it. You know, these are purely digital assets, guys. यानी कि तुम आज बिटकॉइन की बात करते हो तो हमारे हाथ में बिटकॉइन थोड़ी दिख रहा है. इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज टुडे होस्टेड समवेयर एंड दैट्स इट. वो अल्गोरिथम चल रहा है जस्ट. ये अभी जो है पीपल का उसके अंदर बिलीफ इतना स्ट्रांग और इतना बढ़ गया है दैट नो वन कैन डिनाई और डिफाई दैट फैक्ट कि यार ये भी कभी फेल हो सकता है. बट इवन दैट कैन हैपन वन डे. यू नेवर नो. हु न्यू दैट टेरा वुड फॉल सो बैडली, right? So so this is all a form of technology. So we are all driven by technology, if you see, in a way. Whatever today we are believing in form of a in one form of a technology. So please bear that in mind. Talking of which, हर क्रिप्टो करेंसी एक अलग अलग एक अलग प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व कर रहा है. वो उस आइडिया को लेके बैठा है. आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन शेयर सम इमेज ओवर हियर और नॉट, बट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग. प्रोबेबली दैट्स एन इमेज which would probably give you a better picture of what has happened. तो हम what is UST है वहां पे हम we are going into the phase of 2017-18 जहां Terraform Labs was newly established and they got to know, and that there's just new you guys hear me? Sorry for the yeah, can you guys hear me? Cool. Let me just send that picture over here. I'm trying. Oh man. Okay, I don't have that picture, man. Somewhere. Okay, got it. Yep. This is this is a picture you can see. Can you see this picture? So this is the idea of why Terra was created. So in a talk of DoCon in one of the conferences, basically not a conference, it was a meetup. So there, I'm talking about 2018, okay, 2018 or 19, where he was talking about this, that what is the problem that Terraform Labs is solving. So there were two problems. One was complex payment rails, as you can see, in single blockchain layer. So that was what they were doing. तो अगर तुम देखो तो इसके अंदर बेसिकली जो हम नॉर्मली करते हैं, यानी कि पैसे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, सेटलमेंट टाइम, ट्रांजैक्शन फीस वगैरह, टेरा उसी चीज को सॉल्व कर रहा था, विच एनी डीफाई प्रोजेक्ट aims at solving. They'll say that we have higher transaction speed, then lesser fees and all that stuff. तो वही इसमें भी लिखा, देखो 6 सेकंड में सेटलमेंट टाइम है, फीस हम इतनी लेंगे एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये जो दिस एंटायर आइडिया है जो तुम देख रहे हो ना, दैट ये इस दो आइडिया के ऊपर यूएसडीटी उन्होंने बनाया. तो उसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा बनाया कि ही सेड कि यहाँ पे हमारे एल्गोरिदम में दो कॉइन्स होंगे. एक होगा यूएसटी विच विल बी अ स्टेबल कॉइन एंड सेकंड विल बी लूना. अब लूना में क्या हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा, आई एम नॉट श्योर. यू कैन लेट मी जस्ट टर्न ऑन माय स्क्रीन, मे बी देन you'll be able to understand. Okay, this is okay. I cannot turn on. Ray, I cannot turn on my camera, right? Yeah, I don't think we can do that. I can't, right? Uh, yeah, no. Is that an option? I don't think it's an option in this No, I don't think so. stage. Okay, so imagine a तराजू, ठीक है. थोड़ा सा एक इमेजिनेशन में मेरी हेल्प कर दो यहाँ पे. मैं यहाँ पे तुम्हें शायद वैसे, हाँ वैसे नहीं दिखा पाऊंगा,
बट इमेजिन एक तराजू जहां पे एक तरफ तुमने यूएसटी रखा है, दैट इज अ स्टेबल कॉइन, और एक तरफ लूना सी रखा है, यानी कि लूना, सॉरी लूना सी कह रहा हूं मैं, लूना रखा है। दोनों अलग अलग कॉइन है, सेम ब्लॉकचेन के है, टेरा ब्लॉक। हुआ क्या ना, अब मैं बताता हूँ। यूएसटी एक स्टेबल कॉइन था, उसकी वैल्यू हमेशा पेग्ड रहेगी, यानी कि वो हमेशा $1 के आसपास ही रहेगा। डॉलर बढ़ेगा वो बढ़ेगा, डॉलर गिरेगा वो गिरेगा, मतलब उसका चलते रहेगा। उससे आगे नहीं जाएगा, वो बहुत बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, इट विल जस्ट वेरी विद इन सेंट्स। गॉट इट। लेट्स टॉक अबाउट द लूना। अब लूना का फॉर्म क्या था ना, ये तो हो गया एक स्टेबल कॉइन, लेकिन लूना जो होगा दैट विल बी द अदर कॉइन विच विल बी यूज फॉर इन चेन ट्रांजेक्शंस, जैसे कि फॉर स्वैपिंग, यानी कि टू बाय एसेट्स, टू रेंट एसेट, टू स्टेक देम, वगैरह वगैरह। इसके अंदर और एक बहुत अच्छी बात जो तब इट वाज लुकिंग वेरी फैंटासाइजिंग टू ऑल द यूजर्स वाज टेरा वाज ऑफरिंग 20% APY, दैट इज एनुअल यील्ड। 20% एनुअल यील्ड, कैन यू इमेजिन? 20% यील्ड किसे कहते हैं? यानी कि अगर आप 1000 USD आपके बैंक में रखते हो, तो आपको एक साल बाद 1200 USD मिलेंगे। लाइक दैट इज द इंटरेस्ट रेट दैट दे आर गिविंग यू, 20%। एंड द एल्गोरिथम वाज डिलीवर्ड इन अ वे कि आप जितना ज्यादा उनके पास रखोगे, आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ज्यादा आपकी ट्रांजेक्शन फीस कम होगी, उतना ज्यादा आपकी ट्रांजेक्शन स्पीड बढ़ेगी। Now people thought that this is good. I mean, we can trust them. Slowly they started taking on to the market in such a way कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का उनको भरोसा भरोसा जीतते गए, और ज्यादा पैसे उन्हें मिलते गए। लोगों का उनमें भरोसा बढ़ता गया, तो लोग उनके पास और पैसा रखते गए। पैसे का मतलब मेरा ये है कि ये जो वॉलेट्स थे ना, जो बेसिकली द वॉलेट्स दैट दे हैड क्रिएटेड, दे वांटेड पीपल टू accumulate more and more USD and keep them into the or stake them or lock them into their wallet। और ये यूएसटी यानी कि ये स्टेबल कॉइन को ये लोग यूज कर रहे थे इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। नाउ दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। Now, though we call that it is decentralized, everything is decentralized, this is not truly decentralized. Now, people say that Do Kwon was kind of a dictator, while I mean the ones that worked with him, and this is some kind of an insider news that I'm providing you, that Do Kwon has been a kind of a dictator person when it comes to working with him. So he used to show that whatever decisions that it's making or whatever is happening is a cumulative or it is a collaborative approach. But all of the decisions that he was making was of his own. He would not even consider taking a secondary opinion from his co-founders. Forget about their team. His team used to work day and night. But when it comes to making crucial decisions such as these, he used to take it onto his own and do whatever he thought so is right. इसमें अच्छा और बुरा ऐसा हुआ that by the time they were succeeding, everything was good. The sky was pink, the air was purple, and like the decision after decision, whatever he was making, nobody was there to blame him. बट ये ब्लेम उसे क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज हर चीज वो जो भी ले रहा था वो सही हो रही थी, है ना। गलत होती थी तो लोग कुछ बोलते थे। लेकिन बाद में हुआ क्या ना, at some point of time people started thinking that our presence does not matter anymore to this company. So during 2020 and 2021, a lot of people started leaving Terraform Labs. To this, Dokon reacted saying that this is just a form of opposite ideas, or the ideas clashing, and maybe today we don't align too much with our team, and hence people are leaving us, but that doesn't make us any weaker. We are gonna grow. This was his words. But he was kind of a careless as well person. I mean, he is a careless, he isn't died yet. तो उसे जो मन में आता था वो ही करता था। इसमें ऐसा हुआ कि यूएसटी आपको अब फिर से थोड़ा एल्गोरिदम पे आ जाता है। ये तराजू में एक तरफ यूएसटी एक तरफ लूना है। तो ऐसा था कि आपको अगर स्वैप करना है तो आप सिस्टम से यूएसटी निकालो, उससे स्वैप करो, आपको लूना लो, एंड देन लूना को आप सिस्टम में फिर से यूज करो। फिर वो लूना को आप जब यूज करोगे तो अल्टीमेटली अब मैंने कुछ खरीदा तो मुझे वो खरीदने के लिए लूना देना पड़ेगा, मैं तुम्हें लूना दूंगा और तुम लूना को फिर से स्वैप करके यूएसटी लोगे, और ऐसे करके तुम इस यूएसटी को स्टेक करोगे। तो दे वांटेड पीपल टू कीप देयर मनी विद देम, दैट्स इट। They wanted people to stake their crypto with them, which they were using it illegally. अब this is the entire their algorithm. अब थोड़ा algorithm पे आता है। Algorithm was designed in a way कि जहां पे अगर लूना कभी गिरता है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस इन अ वे, ये जो तराजू है उसमें एक तरफ लूना है एक तरफ यूएसटी है, समझा। अब अगर लूना कभी गिरता है तो क्या होगा? यूएसटी एक तरफ से ऊपर जा रहा है ना, लूना गिर रहा है मतलब वो नीचे जा रहा है, यूएसटी एक तरफ से ऊपर हो रहा है। आर यू गाइस लिसनिंग टू मी गाइस? Are you catching up, or am I going too fast? I can repeat some point if you were missing. Okay, all good, right? Everyone's with me. Give me a thumbs up if you are with me.
Cool. Nice to keep up the spirit. We are just about to know the exact reason what happened. I'm just trying to give you a little bit of backstory because वो भी पता होना जरूरी है. शायद ये तुम्हें बाहर कहीं मिलेगा नहीं, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है. I'm just sharing whatever I have got to know from in the entire market. So far so good. तो अब लूना एक तरफ अगर तराजू पे नीचे जाता है तो एक तरफ से यूएसटी ऊपर जाएगा. ये पूरा एल्गोरिथम डिजाइन ही ऐसा किया गया था कि अगर कभी लूना गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यूएसटी जो है वो खरीदने चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू वहां पे और बढ़नी चाहिए, ज्यादा वोलेटिलिटी होनी चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए. लेकिन इसमें हुआ क्या, in in at the start of this year and a couple of weeks ago, when everyone was just curious about कि what if तेरा को बहुत ज्यादा attention मिलने लगा था. Any big event, any big place you talk about, everywhere Terra was there. Their team was there and they were kind of the VIPs over there. Everyone wanted to partner with them. देखते देखते पिछले 2 सालों में टेरा मेड एन एंटायर इकोसिस्टम ऑफ देमसेल्व्स कि जहां पे हर डीफाई प्रोजेक्ट को सर्वाइव करने के लिए टेरा के साथ पार्टनरशिप करनी ही पड़ती थी. एंड पार्टनरशिप विद टेरा वाज लाइक अ वेरी वेरी बिग डील. जैसे आज इफ यू सी दैट दिस वन प्रोजेक्ट इज बैक्ड बाय पॉलीगॉन स्टूडियोज, सो पीपल थिंक दैट पॉलीगॉन संदीप नेलवाल, ओह मैन, दिस इज गोना हिट. वैसा टेरा था 2 years ago. And there was no looking back. Even there were times जहां पे ब्लूमबर्ग और याहू फाइनेंस जैसे बड़े कंपनीज के एनालिस्ट ने भी कहा था कि there is no way going back for Terra. Terra is so big now that nobody can take it down. यानी कि इतना उन्होंने उनके एल्गोरिथम को स्ट्रॉन्ग बना लिया. They had got people's trust and belief in them, but nobody knew until the time that they were going to misuse this. Now this one day, what this Dokon did was, this is just I'm saying that speculating it, okay. Now what he thought of कि यार लोग हमारे पास पैसा तो रख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास पैसा रख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स आ गए हैं, सो व्हाई नॉट टू टेक अ लोन ऑन दिस इन बिटकॉइन. ओके, मार्क माय वर्ड्स, व्हाई नॉट टू टेक अ लोन इन बिटकॉइंस जिसे हम यूज करेंगे और कंपनी के डेवलपमेंट के लिए. वेल दिस वाज रॉन्ग. जैसे यहाँ ऐसे हुआ, वहां यूएसटी की मतलब उन्होंने ये जो लोगों का यूएसटी था वो लेने लगे. उधर यूएसटी का पेग जो था ना वो $1 से हट गया. यानी कि तुम समझ रहे हो, अगर रुपीज में बात करते हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए रुपीज में बात करते हैं, 75 के आसपास होना चाहिए, करेक्ट, या चलो डॉलर्स में ही बोलता हूँ, एक यूएसडी के आसपास होना चाहिए था यूएसटी की वैल्यू. ठीक है, फिर से बोलता हूँ, यूएसटी शुड बी अराउंड 1. What are you discussing here? I am discussing something totally relative to this, and you are here discussing about which is better, Discord or Zoom. Go to LinkedIn for this discussion, guys, not here. Anyways, I'm just kidding. So, how many of you got this point? USD should be around 1 USD. US dollar, I'm saying. Okay, you're not USDT also, US dollar, I'm saying. You got it? You can just like this comment or something like this. So, yeah, like this comment of mine. Cool. समझा. हुआ क्या ना, one morning people saw the value of USD to be pegged to around, it was around 0.92 cents. अब 0.92 cents मतलब ये 8 सेंट से गिर गया, करेक्ट, लाइक हाँ, ये 8 सेंट से गिर गया. Now people got panicked कि यार ये मतलब this was a stable coin, ये गिर कैसे सकता है, वो भी 8 सेंट से. 8 सेंट इज अ बिग वैल्यू, राइट. मतलब तुम 0.99 के आगे अगर कुछ होता है तो पीपल डजंट मैटर, 0.98 वगैरह भी मैटर नहीं करता, लेकिन 8 सेंट गिर गया, यानी कि मतलब देयर वाज समथिंग व्हिच वाज गोइंग रॉन्ग. फिर दिस एट द मार्केट क्या हो रहा था ना, लूना के अंदर एकदम से प्राइस क्रैश होना दिखा थोड़ा सा. सो यहाँ यूएसटी उसको पैक करने के लिए यूएसटी गिरने लगा. वो एल्गोरिदम ऐसे बनाया गया था कि अगर इधर की उसकी प्राइस हमेशा से पिछले सालों साल से उसकी वैल्यू सिर्फ बढ़ते ही रही है, कभी गिरी ही नहीं, पता ही नहीं था गिरना क्या होता है. जब वो गिरा, वो ऐसा गिरा कि पीपल स्टार्टेड रिमूविंग देयर कैश इनफ्लोज. रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट डोकॉन व्हाट ही डिड वाज ही रिमूव्ड पीपल्स होल्डिंग्स व्हिच पीपल वर होल्डिंग एंड यूज्ड इट फॉर गेटिंग लोन एंड यूज्ड इट फॉर हिज द कंपनी रिसोर्सेज. नाउ दिस वाज हिज ओन डिसीजन, ओके. This was not a company decision, this was a decision that he made. जैसे ही सिस्टम से इतना सारा कॉइन निकला, तो वो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए यूएसटी को गिरना पड़ा ताकि वो उधर लूना को बैलेंस करे.
अब वो गिरते गिरते एकदम से इतना नीचे चला गया कि देखते ही देखते अगले 8 से 12 घंटों में उसकी वैल्यू जो थी वो मतलब इट वाज अराउंड 20 cents ओनली. इट वाज ओनली 20 cents. कैन यू इमेजिन 20 cents? एक एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू गिर के इतनी गिर सकती है. आई मीन दिस वाज लाइक अ फकिंग मीम कॉइन क्रैशिंग. Forget about going to the moon. This was going to the grass. 80% का ड्रॉप, एग्जैक्टली 80% का ड्रॉप. अब इसमें हुआ क्या? जैसे यहाँ ये यूएसटी गिरते हुए दिखा, लोगों को लगा कि यार इससे पहले ये और गिरे, हमने इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए. पीपल गॉट अफ्रेड. यहाँ बात आती है ग्रीड एंड फियर की. फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का नाम सुना है? यहाँ बात आती है उसकी. नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डेथ स्पाइरल. एक के बाद वन इवेंट was linked to the other and the dominoes went falling and falling and falling and it never stopped. People saw UST's price getting unpegged from $1, falling massively. As it was falling, it went to 20 cents and by some time it even got crashing to pennies. Tab tak people started losing trust in that. And once it was, yeah, nice GIF Saksham. And once people saw that this was losing, they started removing their reserves from Luna, sorry. अब Luna का क्या हुआ? People started selling them more and more. अब क्योंकि वो उससे सेल करने लगे, ऐसे वक्त में तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? एनी गिव मी योर ओपिनियन कि एक तरफ यूएसडी आपका एक स्टेबल कॉइन गिर रहा है, ये लूना का प्राइस नीचे जाता समझ सकता है, लेकिन स्टेबल कॉइन गिर रहा है. स्टेबल कॉइन के डर से आप इधर आपके पास अगर लूना है तो आप लूना भी बेचने लगे. एक ऐसा टाइम आ गया कि वेयर पीपल वर रेडी टू स्वैप यूएसडी फॉर द प्राइस ऑफ लूना व्हाटएवर इट वाज इन द मार्केट, बिकॉज दे थॉट कि अगर अभी इस प्राइस पे नहीं बेचा है तो कल तो ये इससे भी और कम हो जाएगा और शायद मुझे कौड़ी के भाव भी नहीं आए. ऐसा करते करते पैसे सारे डूब जाएंगे. इसीलिए 20 सेंट्स के रेट पर भी पीपल स्वैप देयर यूएसटी फॉर लूना एंड सोल्ड इट, बिकॉज 20 सेंट्स पे उसे सेल करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था. दे थॉट कि जो भी कुछ मिलेगा इट वाज गुड. इधर यूएसटी गिर गया, उधर लूना गिर गया और वो गिरते ही चला गया. सून पीपल थॉट, द इन्वेस्टर्स थॉट दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उनके पैसे निकाल लिए. फिर धीरे 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 बाकी इन्वेस्टर्स जो थे, ऐसे वक्त में आपके दिमाग में क्या आएगा? रन. साइनाथ, वेरी नाइस, स्मॉल एंड प्रिसाइज, रन. या व्हाट डू यू थिंक, व्हाट you would have done in such scenario? Tell me honestly, come on, shoot, this is for you. होल्ड. अरे भाई कौन है अकड़ बकड़? होल्ड, अभी भी होल्ड. वॉरेन बफन की थ्योरी काम नहीं आएगी क्या? विच थ्योरी सक्षम? द होल्डिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कंपाउंड इंटरेस्टिंग, वो वाली. Guys, someone else, what do you think, what you would have done ऐसे वक्त में? हाँ, others are greedy, sell when others are, हाँ अच्छा अच्छा. लेकिन यहाँ पे सेल की बात ही नहीं आ रही है ना, मतलब ग्रीड की बात ही नहीं आ रही है. Who's greedy? I don't think so anyone was greedy over here. कुछ चुने हुए लोग होंगे which still had interest or hope in that something would happen out of this. But I don't think so this was buy when others are fearful. निकलो exactly. So what happened was, let me tell you. धीरे धीरे बताओ. जैसे यहाँ यूएसटी और लूना को गिरता हुआ देखा, पीपल थॉट दैट दिस इज अ बबल, दिस इज अ बबल बर्स्टिंग. अगर एक स्टेबल कॉइन गिर सकता है, इसका मतलब हमारे होल्डिंग में रखे हुआ कोई भी कॉइन कभी भी क्रैश हो सकता है. सो टुडे इफ यू नो, maximum of the crypto investors and very major amount of investors do not know the exact fundamentals of the coin that they are investing in, the cryptocurrency that they are backing. They just invest in it because they are influenced by someone, or else they just see that this is worth the hype. Basically influential. Very few of them know what the exact cryptocurrency does, what is the problem that they are solving, what is the gap they are bridging, or something like this. So due to this lack of knowledge and stuff, people got afraid. The fear index just it crashed. बहुत fear हो गया था, and people started selling other form of cryptocurrencies also. अब इससे हुआ क्या ना, मार्केट पे सेलिंग प्रेशर आ गया, लोग बहुत ज्यादा बेचने लगे. इसमें कुछ लोग ऐसे भी who were more and more accumulating, but some of them were smart that they were not catching the falling knife, which is good. Even you should not
ever catch a falling knife. You never know how bad you will go, right? So this went up on. This went on and on and on. जहाँ पे ये सारे क्रिप्टो करेंसी एक करके गिरने लगे. अब ये और क्यों गिरने लगे? देखो, वो तो एक कॉइन के साथ हुआ, लेकिन ये बाकी सारे कॉइन्स क्यों गिर रहे थे? जैसे मैंने बताया, द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर दिस लॉस्ट ट्रस्ट, बट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, यानी कि venture capitalists, the hedge funds, the private banks and private funds like us who had invested into these coins, they saw कि यार अगर ये कॉइन गिर सकता है, यानी कि दूसरे भी इनके जैसे जो कॉइन्स है वो भी कभी भी क्रैश हो सकते हैं. इस वजह से they started crashing as well. They started removing their funds. They started फंड ने भी निकाल लिए क्या पैसे. नो, वी डिडंट इन्वेस्ट इन टेरा. टेरा वाज अ वेरी बिग फर्म. बाय द टाइम टेरा वाज फॉर्म्ड, वी वर नॉट इवन इन द मार्केट. तो ऐसा करते करते बाकी फंड्स ने उनके पैसे निकाल लिए. और अगर जिस फंड में अगर बताओ तुम्हें अगर कल कोई कहता है कि मुंबई मुंबई इंडियंस के पीछे से रिलायंस हट गई, मुकेश अंबानी हट गया, तो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करोगे क्या? किसी ने बता दिया कि उसके साथ साथ वो रोहित धवन का रोहित शर्मा भी हट गया, क्या उसे भी सपोर्ट करोगे? नहीं, सवाल ही नहीं. फिर आपको लगेगा कि टीम में तो फिर दम ही नहीं बचा. मैं जिस बंदे के लिए कर रहा था वो चेहरा हट गया, जिस कंपनी के लिए कर रहा था वो आदमी पूरी कंपनी लेके भाग गया. फिर मैं उस सिर्फ एक जर्सी को क्यों सपोर्ट करूं? तुम्हारा जितना भी कुछ होप है वगैरह वो निकाल दोगे वहां से. करेक्ट. भागो, एग्जैक्टली भागो. तो सारे भाग गए. And this led to the market crash. अब इसमें ये crypto market crash था. What happened was, looking at the crypto market crash, people started, moving towards the stock market. Now, stock market is, it's always looked as one of the form of fixed interest income. फिक्स इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? जिसके अंदर तुम्हें पता होता है कि टुडे इफ यू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन दिस, बेसिकली म्यूचुअल फंड जैसे, दिस सर्टेन अमाउंट, तो आपको 3 साल बाद एटलीस्ट 5% रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, डिसरिगार्ड ऑफ द मार्केट कंडीशन. आपको 3 साल का कंपाउंड रिटर्न ही इतना होगा कि आपका मिनिमम रिटर्न 5% होगा, 10% होगा. ये फिक्स है. सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग. तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इनकम. तो ये मार्केट्स की तरफ पीपल स्टार्टेड मूविंग बिकॉज दे न्यू दैट दिस बेसिकली, जब मैं आज बात करता हूँ रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, these shares are being backed by legit form of companies. You can see them today that they are, they are situated somewhere, they are doing some legit work, they have got some fundamental, they are working, they are generating revenue, not unlike this guys. Correct? Yeah, someone made 93 USD from 300 USD while in the spiral. Yeah, that will be out of the perpetual incomes maybe. Soon the market started crashing. Soon people started sharing their stories, what's going up, and how many, how all of them have been affected with this. और ये सारे this $200 or rupees, man, KK. That's big. So this never, this never stopped. So ये markets गिरते गए. अब इसके अंदर everyone was waiting for Dokon to come up and show what really happened. Where did it go wrong? और ऐसे वक्त में जैसे, the turning point was when the American Securities and Exchange Commission, SEC, नाम सुना होगा. SEC का नाम सुना है किसी ने? अमेरिकन SEC, SEC. Yeah. SEC, Securities and Exchange Commission. When they filed a complaint saying that we want regulatories and depositories, to know that ये सारा fund गया कहाँ. Because it was a $45 billion of cash. $45 billion. Just imagine. मतलब कुछ कंपनीज का उतना नेट वर्थ भी नहीं होता है जितना का ये एक दिन में क्रैश हुआ था. सो ये अब, और फिर धीरे धीरे पता चला कि टेरा जो प्रॉब्लम बता रही थी, यानी कि टेरा जो चीज बता रही थी दैट वी सॉल्व दीज 2 प्रॉब्लम्स, वो 2 प्रॉब्लम वो एक्चुअल में कभी सॉल्व ही नहीं कर रहे थे. दिस वाज अ स्कैम काइंड ऑफ वे, जहाँ पे वो लोगों को बस कहते थे कि अपना पैसा तुम हमारे वॉलेट में रखो, आप जितना ज्यादा रखोगे आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिल भी रहा था. एंड लुकिंग एट दीज अपीलिंग इंटरेस्ट, पीपल स्टार्टेड मूविंग देयर हेड्स टुवर्ड्स देम कि यार इसमें रखना चाहिए, इसके अंदर नहीं रखोगे तो फिर तो मतलब यू आर मिसिंग ऑन टू दैट. जहां बाकी सारे लोग 7 से 10% में दे रहे थे, ये 20% दे रहा था, डायरेक्टली डबल ऑफ दैट, एंड दैट टू अश्योर्ड इंटरेस्ट, अश्योर्ड रिटर्न. पीपल थॉट दिस इज अ स्टील डील. दे स्टार्टेड मूविंग टू दैट. अब वो ये पैसों को लेके इस तरह से लोन. अब ये जो सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा था ना, इस सिस्टम इम्बैलेंस में ये अमेरिका तक भी कैसे गया, बिकॉज इन लोगों ने ये सिस्टम को वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अचानक से दे filed for a loan of few thousands of crores in rupees I'm saying, or
Otherwise it was in million billion dollars in Bitcoin. Again, as I said, in Bitcoin, saying कि, और देखो मतलब उसका दिमाग देखो. Now he toned down to the entire story की saying कि अभी मार्केट गिर रहा है, हमारा एल्गोरिदम क्रैश हो रहा है, इसीलिए वी वांट अ लोन टू स्टेबलाइज दिस इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन, कि अगर हम बिटकॉइन रिजर्व्स में लेंगे तो विल स्वैप इट फॉर यूएसडी, और ये वापस अब जब सिस्टम स्टेबल हो जाएगा तो मार्केट विल गो अप, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हम आपको जो रिटर्न्स बनेंगे उससे लोन फिर से पे ऑफ कर देंगे. लेकिन एज यू सी सो उसे लोन कभी मिला ही नहीं, बिकॉज पीपल न्यू यार कि अगर हम ये पैसा भी दे दे और इससे भी अगर ये गिर गया तो हम मांगने किसके जाएंगे, कोई है थोड़ी कंपनी एक्चुअल में, कोई फॉर्म है. Luna Foundation got LFG, which was an entity which was backing this entire Terraform Labs. Basically this was a kind of a parent company that they had set up, जो उनके सारे लीगल अफेयर्स देखती थी. उन्हें द लोन वाज फाइल्ड फ्रॉम देम, तो वो वहां से चला गया. व्हाट हैज ही शेयर्ड? Some stranger visited Luna Founder's house because crashed and later he was arrested. Yeah, man, there are a lot of events like this. One person just lost his entire life saving of $6 million. $6 million of his savings was in USD. और जैसे ही वो गिर गया, it was a, he said कि I had taken loan from the bank. Now the only thing that is remaining with me is my house. And after that, suicide is the only option. Many of the people committed suicide due to this. So just जो होल्ड का मतलब ही नहीं बनता ना, आप होल्ड कहाँ करोगे? अगर जो कंपनी आप बैक कर रही है उससे वो कंपनी ही गायब हो जाएगी, आप होल्ड कब तक करोगे? इफ यू कैन सी पीपल स्टार्टेड लूजिंग होप, उन्हें पता चल गया कि यार ये तो मतलब अपना नाम खराब कर रहा है. इट वाज इवन बीइंग डिफेम्ड और डीलिस्टेड फ्रॉम द लिस्टिंग एक्सचेंजेस. WazirX, Coinbase, CoinSwitch, you just name it, CoinDCX, everyone delisted it the same day. थोड़ा विंडो दिया था उन्होंने फॉर स्वैपिंग, बट देन दैट वाज pennies. See, understanding right white paper and tech is all good, but ultimately my point is it is even tech. Always remember this, Amit Thakur. I'm speaking this to you and to all of the people who are currently listening. You believe each one of you here only look after the fancy and appealing returns that it seems onto the screen. कि एक साल में ये इतना बड़ा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि अगर वो एक साल में इतना गिरेगा तो क्या हाल होगा. अंडरस्टैंड दैट पार्ट एज वेल मैन. वो जब गिरेगा ना तो वो उतना जितना ऊपर गया है उतना ही गिरेगा भी. एंड दिस इज हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ. जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा ही. एवरीथिंग. ठीक है, कोई भी प्लेन हमेशा के लिए हवा में थोड़ी उड़ सकता है, कभी ना कभी उसको गिरना ही है, नीचे आना ही है. सो ये people were speculating, but their intentions or the form they were representing it, people thought that there's still hope, but there's nothing like this. उनका सेकंड टोकन भी इसीलिए क्रैश हो गया. दिस थॉट कि हम सेकंड टोकन बनाएंगे और फिर से सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाएंगे, स्टेबलाइज दिस, यूएसडी फिर से ऊपर आ जाएगा, फिर लूना की प्राइस जैसे यूएसडी स्टेबल हो जाएगा, पैक कर देगा वैल्यू यूएसडी को, तो ये धीरे 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 वापस लूना की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगेगी. बट दिस इज रॉन्ग. वंस यू लूज इंटरेस्ट, उसके बाद तो कोई वापस सवाल ही नहीं है. सो दिस इज व्हाट लेड टू द एंटायर मार्केट क्रैश. उन्हें कभी लोन नहीं मिला, वो लोग पैसे खा गए. फिर धीरे धीरे पता चला कि उनकी कंपनी में भी दिस वाज हिज एंटायर डिसीजन. And whatever that this funds were removed, this was kind of a coordinated scam, but there is yet no solid proof that we have got against this. This is just from some kind of insider news that the people who were working with him, people who were within his company, he had been transacting for the last few weeks, knew about this, that this is what it has led to. And yes, we can say that it is a coordinated. For now, we can only believe this, that this was a coordinated scam. और ऐसे करके लोगों ने वो जो पैसे वहां से निकाले उसे और किसी क्रिप्टो में उन्होंने स्वैप कर दिया. नो, क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज्ड, सो इट कैन नॉट बी इवन ट्रैक्ड. तो अगर तुम देखो ये पता कैसे चला कि दिस वाज कोऑर्डिनेटेड. आप टेरा की जो ब्लॉकचेन के ऊपर आप जो बीएससी स्कैनर वगैरह होते हैं ना, स्कैनर जहाँ पर ट्रांजेक्शन स्कैन होते हैं, ट्रांजेक्शन का आपको वो ब्लॉकचेन डेटा दिखता है पूरा. ये बीएससी स्कैन, इथेरियम स्कैन वाले अगर पता होगी तो प्लीज चेक फ्यूचर. सो आई एम हियरिंग बैड न्यूज़ अबाउट सो. guys, come back for a minute, come back for a minute. मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इनसाइडर न्यूज़ बता रहा हूँ कि टेराफॉर्म के उस द टाइम ऑन 9th of May, it was 9th of May. 9th of May when the markets were crashed, after speculating and investigating a little bit of it, जब
पता चला कि वो उनके ब्लॉकचेन पे जितने ट्रांजैक्शंस हुए दे वर मियरली अ मिनट अपार्ट, यानी कि उनके अंदर का टाइम डिफरेंस है ना ऑलमोस्ट सेम टाइम डिफरेंस था। यानी कि एक ही टाइम पे बहुत सारे यूएसटी जो थे वो डंप किए गए, यानी कि एक साथ बहुत सारा बेचे गए। अब बेचे गए मतलब वो सिस्टम से निकाले गए, निकाले गए मतलब पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट। इसका मतलब दिस वाज अ कोऑर्डिनेटेड स्कैम। व्हाई वुड एनी पर्सन रिमूव सच बिग अमाउंट ऑफ स्टेबल कॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एट द सेम टाइम, एंड वो भी एक बंदे ने नहीं किए, अलग अलग एड्रेसेस से भारी भारी अमाउंट में पैसे उतने सारे यूएसटी निकाले गए थे। एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू डो कॉइन इज, probably says that it was a form of just some investors losing interest, but it was not investors. Definitely they were not investors. It was a coordinated scam, probably done by bots or some people sitting behind the bots, but ultimately it was people, right? So that's what led the entire scam. So basically, this was a death spiral which went upon and upon and upon, but it chalte gaya. So very much similar to what happened in 2008. But yeah, that's where we are today. Now the thing is that people have, about fear and greed. If we talk, they are neither greedy nor fearful, but yeah, more onto the fear side, because now they have lost trust into these assets. Whatever people that you see today into the market, half of them are just here to recover the losses. Most of them have lost interest. They are here just to get the money that they have invested, that they have put in, and they're not going to do it ever again. That's about it. So yeah, this is the entire thing. So yep, off to you guys. Shoot across the questions, whatever comes to your mind. Come on, Saksham, Amit, Bajrang, KK, go ahead. Whatever doubts that you have on your mind, I see you guys are discussing about something. I want to know what it is about. What resources you follow and learn about Web3 blogs, podcasts. Dude, I follow Crypto Panic. Crypto Panic is kind of a news aggregator. So any news that comes out in the market, at first it is aired on Crypto Panic. You can go check out cryptopanic.com. I personally refer to that. So that gets me the news to every other place, basically from the fintech. Please tell future of Soul. I'm hearing bad news about Soul also. See, our Soul, I think so. It has got good fundamentals. लेकिन see, now this is a mere अभी कुछ भी बोलना गलत ही होगा. If I say that it has got good fundamentals और वो कर crash हो गया तो कह नहीं सकते. But comparatively, there are more projects on Solana than it was on Terra, and Solana scheme also is good. So nothing's gonna be like this. So Luna is now visible in Luna's Loan C on funds page. WazirX finance transfer for Loan C has been enabled. What is this? या मैन, तो ये लुनसी क्यों है मैं बताता हूँ। ये सेकंड कॉइन है ना जो मैंने बताया कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दे केम अप विद अनदर क्रिप्टो करेंसी। कैन यू से अबाउट स्टेपन? या स्टेपन इज अ न्यू इनोवेशन इन द ब्लॉकचेन स्पेस। इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट। दैट इज सालों में एक बार एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है which makes people talk about it. So Stepan is like one of them. Yeah, so Lunacy, Luncy क्यों आया? Luncy आया because now this is the second coin that they are listed and they want to give a chance to their users or the holders where they can swap it. अब समझने की बात है यार, अभी तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था ये एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। वो चाहते हैं कि आप उनका कॉइन ज्यादा से ज्यादा खरीदे, इतना ज्यादा क्वांटिटी में उसे आप खरीदोगे उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। उधर यूएसटी यानी कि उसका जो स्टेबल कॉइन है उसकी वैल्यू फिर से उतनी इक्विलिब्रियम पे आएगी और फिर से ये धीरे 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 करते हुए हर बाकी क्रिप्टो करेंसी की तरह लून से भी अपनी फिर से वैल्यू गेन करेगा। सो दैट इज व्हाट दे केम अप विद अनदर टोकन। So basically you can assume this that Luncy is just a new form of a token through which they want to clear their bad images. On what factors does GST price depends? Bajrang, I think so. This is the wrong place to discuss about GST. I mean, there's not a. I mean, GST is some topic which is out of the out of current discussion. So, step in review, please. As I said, Stepan is it is a good project. It is one kind of new innovation. Is there any judicial support for crypto related scams? Judicial support? What do you mean by support? बेसिकली यू मीन दैट सच इफ ऐसा अगर स्कैम होते हैं तो आप कर पाओ। तो यार इंडिया में तो देखो अभी तो ये पूरा ही लीगल है, तो आपका अगर लेजिट प्रॉब्लम भी कुछ होता है सो इट विल बी स्टिल टर्म्ड एज इलीगल ओनली, बिकॉज ये ऑथराइज नहीं है ना, मतलब गवर्न नहीं है, रेगुलेटेड करेंसी नहीं है, ये अनरेगुलेटरी है। तो इसके अंदर होने वाली हर चीज कॉन्सिक्वेंटली इज इलीगल
What's your opinion about NFT as it is also connected to metaverse? देखो यार NFT, look at it in a form of, मैं देखो यहाँ एक पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, एजुकेशनल फाइनेंशियल ओपिनियन नहीं कह रहा हूँ, just my personal opinion I'm saying in terms of all the crypto thing. Most of you guys are currently studying, okay, and are very curious about crypto, investing in crypto and all that part of stuff, but only invest that money in crypto which you are ready to lose. Doesn't matter which crypto I'm talking about, even Bitcoin. I'm again repeating, even Bitcoin. Because the thing is, if you go check out there, even the biggest of financial influencers, they have to say the same. If you see the total entire portfolio, hardly 5 to 10% of their earnings are allocated in crypto. Otherwise, all of them are being allocated into some solid assets and investment funds. It would be mutual funds, PFs, uh, stock market, ETFs, whatever, bonds, real estate, doesn't matter. But crypto holds always the minimum of it because they know even they are not supporting it fully. This is some kind of insider news that I'm telling. Even the biggest faces that you today see, they have just very small amount of crypto. But why they show their face in crypto? Because they know that this is the emerging space where they can come up as a new face to the. अगर वो चल जाता है तो यार very good, they'll be a new influencer. नहीं चला तो उनका क्या जा रहा है, वो पैसे तो वैसे भी उनके वैसे which is not gonna hurt them anymore. I thought I should share that, man. Yeah, what is it? What is it? I got scammed for rupees 30K 1 year ago. Is that hope or justice? Oh, okay. Anshuk Das. See, you can. I think so. You can. I'm not sure about this. I need to. I mean, I need to understand what was this scam entirely about, because mostly crypto spams are unregulated. They can't be. These are untraced. Only invest if you can use. Exactly. Only invest if you can use. That is the key rule of investing in crypto. How can I invest 10 rupees in crypto? Who said 10 rupees? No, the minimum investment is 100 rupees, I think, on any exchange if you go. Can you say how the market will be in next 2 to 3 months? No, dude, I am not an analyst, but what I can say is the markets will take time to recover. Somewhere around October to November, we should be into the next bull run again. Even us as a venture capital, we are not investing anymore. We have not been investing into the market for the last entire month as well. So that is about it. So that is also a dark side of venture capital. When in such acting markets, you cannot really make any profit. So you have to survive these. Most of the funds just get shut down now. I'll tell you one more thing. You'll see a lot of companies laying off their employees into the next coming quarter. ये जो थर्ड क्वार्टर आने वाला है ना, इसमें बहुत सारे लोग अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेंगे. There'll be mass hiring हुई थी in the COVID era 2020. There was a huge boom. अब इसमें इन्फ्लेशन का भी रोल है, बट यहाँ पे अब बहुत मास फायरिंग भी देखोगे तुम. होगा, a lot of people will just fire their employees, which is wrong, but that is the only way out for them as of now, because everything is making losses. If you see Y Combinator's letter, Sequoia's memo, every big VC firm, they are sending letters of hope to the investor, to their companies, portfolio companies, that just hold on to these acting markets for the next few months. And if you go through this, you'll go through the next entire 5 years probably. But if you don't survive this, you're not going to survive your company at all. Can you say how the market will be? According to you, what is the next big thing? What do you mean by next big thing? So how can I invest 100 rupees in crypto? 100 rupees in crypto is simple, man. You can just, transfer your 100 rupees from your bank account to any kind of exchange. Basically, I use all the exchanges. I'm on all exchanges. So, but I like Coinbase, Kuber. It's one good of them. You can use BitBNS. BitBNS has got UPI transfer enabled. So I like that part. It's that only one thing for which I like BitBNS. Otherwise, I personally like Coinbase, Kuber a lot. Otherwise, you have got WazirX, 26, whichever one you like the most, you can use that. Okay, it's simple as that. You can just transfer 100 rupees from a bank account to your wallet and buy any crypto you want. Can you accept a friend request on Discord? Yeah, I'll do that, man. I'm not very active over here. In order to buy USDT from Binance, it's asking to buy minimum of 15 USD. Yeah. So do one thing for Binance. Don't buy 15. Buy on WazirX and then send the funds to Binance. It is free. The transfer is free.
बाइनेंस के वॉलेट में आपके जितना भी फंड है, मिनिमम से मिनिमम 100 रुपए का भी फंड होगा तो वजीरेक्स से बाइनेंस में आ जाएगा. Then is it worth to make a career in Web3? Definitely it is worth it. Web3 is an emerging technology. See, हर टेक्नोलॉजी जब भी कभी यानी कि हर फील्ड जब भी कभी ग्रो होती है उसके अंदर छोटे मोटे ऐसी यानी कि छोटे मोटे नहीं कहूंगा बट देर आर सच लूप होल्स एंड फॉल्स दैट आर ऑलवेज गोना हैपन. Somebody or the other is going to scam. If you remember the Subroto Roy Sahara scam, if you remember the Vijay Mallya scam, these people like were the big shots who knew the loophole of the entire ecosystem, and what they did was they just started digging money from these loopholes and leveraging them. Okay, which was wrong. But always remember, at one point of time, you will always find at the end of the tunnel, you'll find darkness if you're using this. Okay, it may look very fancy and making a lot of returns in the very beginning, but this is not going to lead any of the person anywhere. But at the same time, the ones who are surviving in these markets, talk about Vijay Shekhar Sharma from Paytm, Kunal Shah from Cred, they survived and today they are just owners of one of the biggest companies in the fintech industry, right? So they leverage the technology for good. So be that. So yeah, Web3 is one of them. It is like the internet found in back in the 90s. Use P2P. Yeah, P2P is also an option. I feel it a lot of hassle, so I just don't do it P2P. There's an Indian guy who bought 1 million NFT and only invest in crypto. That's why people are investing in crypto. यार ऐसे बहुत लोग होंगे. लेकिन tell me, Amit Thakur, what makes you believe that he has 1 million only entirely in NFTs? Do you trust this? You cannot. Yeah, Anshuk Das, maybe we'll talk about it some other day. Coin says there are a lot of hidden charges. See, every exchange has got that. So really can't do. Which has UPI enabled again? BitBNS. BitBNS, Tharva. Many, why people are asking so many NFT problem. NFT has got, a lot of buzz around it. There's not much of clearance around NFTs. Briefly explain about Polygon and its project future. As far as what I can say in a single line is, Polygon has got huge potential. It is the Ethereum competitor, as everyone says, Ethereum killer, it says. And yes, it has got good fundamentals basically. The company, मतलब अगर तुम देखो ना कंपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना उसकी प्रॉब्लम लेजिट है यार और यू कैन सी दैट themselves. यानी कि इफ आई पर्सनली स्पीक इथेरियम पे आज अगर आप मेटामास्क पे कोई एक ट्रांजेक्शन करने जाते हैं इथेरियम चेन पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो आपको इतनी ज्यादा उसकी ट्रांजेक्शन फीस लगती है बिकॉज उसके वैलिडेटर्स इतने ज्यादा है. वो वेरीफाई होने के लिए आपको वो उतनी ट्रांजेक्शन फीस गैस फीस देनी ही पड़ेगी. ऑप्शन ही नहीं है. तो ट्रांजेक्शन टाइम वो उतना लगना ही है 20-25 मिनट. वेयर पॉलीगॉन में वैसा नहीं है. उनके वैलिडेटर्स है, हैसल फ्री है, ट्रांजेक्शन स्पीड भी ज्यादा है और गैस फीस भी कम है. तो ये चीजें तो मतलब it has got huge potential. Invest only when you can afford to lose. Only invest in what you understand. These two tips will help you a lot, guys. Thanks, Cyrus. Exactly. This is what I think. बैडमैन लूना कि जैसे ना हो कि ये भी कोई कम कर नहीं. देखो यार अब हमारा काम है मार्केट स्टडी करना. यू नेवर नो. अच्छा मुझे बताओ टुडे ऑल ऑफ अस वी आर टॉकिंग हियर ऑन द बेसिस ऑफ वन बिटकॉइन वन क्रिप्टो करेंसी दैट केम अराउंड 10-12 years ago. व्हाट इफ दैट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इटसेल्फ स्कैम्स अप. यानी कि अगर वही क्रैश कर जाती है उसके तो ओनर भी नहीं है. आज हम डोकॉन को गाली दे रहे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. बताओ उसके बारे में बिटकॉइन के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे अगर वो गिरता है तो. कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. Entire market is going to crash and crypto, as people say, the big investors say, Warren Buffett and these say, कि crypto is a bubble. Robert Kiyosaki himself calls crypto a bubble. तो अगर ये bubble है तो फिर वो burst हो जाएगा, ऐसा होगा. So this is entirely what I can say, the time would answer is. लेकिन जो बिलीवर है देखो टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी गलत नहीं हो सकती. क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म और अ यूज ऑफ ब्लॉकचेन एंड प्रोबेबली पीपल लुक एट इट एज द फास्टेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी एंड दैट इज द प्रॉब्लम. Otherwise, if you look at the potential of the technology and what it holds, it has got really good potential. आप देखो यार ब्लॉकचेन कितने सारे ट्रेडिशनल फाइनेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. फॉरगेट अबाउट फाइनेंस, ब्लॉकचेन काफी सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है. राइट. हाउ टू गेट स्टार्टेड इन वेब 3? व्हाट शुड वी लर्न फर्स्ट आफ्टर वी नो बेसिक्स अबाउट वेब 3? Bajrang, I would say you should start exploring about your interest and then see what does it align with Web3. Like अगर आपको डिजाइनिंग में है तो फिर आप डिजाइनिंग Web3 डिजाइनिंग में आता है, NFT डिजाइनर्स आ जाता है,
गेम डिजाइनर्स आते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड, काफी सारे ब्लॉकचेन डेवलपर डेवलपमेंट में है, तो हाँ फिर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, ऑन चेन, बैक चेन, डैप डेवलपमेंट, ये सारे होते हैं उसमें, ये डेवलपमेंट हो गया। और मार्केटिंग में तो फिर काफी कम्युनिटी से स्टार्ट होके वो आगे अलग अलग इवेंट्स तक जाता है। So पहले explore your interest, then see which of your interest aligns with the Web3 part, then start learning about that, and definitely then there's no stopping back. That's how I did it. What do you think about Coinbase exchange, which is best? Coinbase exchange, India में उसका थोड़ा problem है. Coin, if you're talking about coin switch, so it is good. Coinbase नहीं है. Binance is good. Binance आप अगर मतलब like for me now I need to take a lot of international payments. So for me Binance works. Binance के अलावा ऑप्शन ही नहीं है. Worldwide Binance is used. So instead of MetaMask है, but MetaMask में लाके मुझे फिर से उसे एक्सचेंज पे तो बेचना ही, मतलब स्वैप भेजना ही पड़ेंगे वो फंड्स, ताकि आई कैन स्वैप इट एंड गेट मनी इन INR. हम इंडिया में ही है ना, अभी भी हम बिटकॉइन में थोड़ी पे कर सकते हैं. आई नीड INR इन माई बैंक अकाउंट, राइट, टू स्पेंड, टू ईट बेसिकली. सो I don't get. I use Binance only. I personally use Binance. And the problem which I said earlier also, कोई भी फंड्स अगर आते हैं तो Binance में मंगाओ, Binance से WazirX में ले लो, WazirX से Binance में जो ट्रांसफर है, it is free. So enjoy it for the for some of the days until which it is free. So Binance से freely WazirX में ट्रांसफर होता है, WazirX पे बेच के निकाल लो. That's the only way. So right now that's the only way. For me, stock market is enough. Uh, yeah, I mean, as far as everyone has their own personal opinion. I started from stock market. I'll never lose hope in stocks. I still hold a lot of stocks. To tech is the key, not greed. Tech is the key, exactly. Back it with tech, follow tech, not the returns. If someone take out a lot of BTC from exchange, it will automatically fall. नहीं, वो मार्केट सेंटिमेंट होगा. हर किसी का एल्गोरिदम वैसे काम नहीं करता है. वो टेरा का एल्गोरिदम वैसा था कि जिसमें अगर बहुत सारे, एक तरफ से उसके दो कॉइन्स थे ना, तो वो ऐसा समझो ना, चेन बीच में है, एक तरफ में एक कॉइन है, दूसरे में दूसरा कॉइन है, तो अगर वो उस चेन में से वो एक कॉइन निकाल लेता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे को गिरना ही पड़ता था या ऊपर जाना ही पड़ता था. तो वो वैसे चलता था, और वो एल्गोरिदम बनाया ही ऐसा था उन्होंने. तो मैं बता रहा हूँ ना, दिस वाज द लूप होल इटसेल्फ दैट ही न्यू ही हैड क्रिएटेड, एंड ही जस्ट लेवरेज्ड इट फॉर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो दैट इज अबाउट इट. छोड़ो, बिटकॉइन का ऐसा नहीं है. ये पहली बार थोड़ी हो रहा है. बिटकॉइन फॉल तो पहले भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, हर साल होता है, हर 6 महीने में जो होता है. तो what is AI used? How is AI used in Web3? Toxic. You seem to be a keen guy. Definitely go check out some upcoming Web3 projects. मैं Web3 projects तुम कहाँ देख सकते हो? You can check it on Top ICO. ये एक वेबसाइट है. ICO7 एक और वेबसाइट है. ये दो वेबसाइट्स पे जाके चेक करना. You'll see a lot of Web3 projects coming up. और उसके अंदर से कुछ कुछ AI के भी होते हैं, तुम्हें मिल जाएंगे. ओके. Binance is the best. Tell my portfolio. No, this is not a portfolio reviewing session. Binance is quite difficult to understand. It is difficult to understand for beginners, but once you get rolling ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी. If you start working with some international clients या तुम्हारी कंपनी का, Binance is the only gateway man. उसके अलावा तुम कैसे, how will they pay you? IG, there is Binance crypto coin. Tell us about it. Binance crypto coin. You're talking about BNB. Binance has a light version which is easy for beginners. Yeah. Anshuk Das, you're right. Okay, I think so. Any other questions, guys, other than your personal portfolio assessment or something? I'm just here for the last 5 minutes. Tell me if you have got any more questions, and we are just about to sign off. Come on. Last questions, 5 minutes. Yeah, Sarup, you have got some doubt, please ping me here in the no mic section. How to work with me? Okay. Which language is best to learn? Which language is best to learn? I personally, I chose in lockdown period, I chose to learn Spanish. I loved the Spanish language personally. But if you see into the top languages that are being spoken into world, in the top 10, I'm saying you, there's Chinese, there's French, there's English, then there's Hindustani, not Hindi, Hindustani. Hindustani and Hindi थोड़ा सा difference होता है. फिर कभी बताऊंगा उसके बारे में. Then there's Spanish also. So I personally wanted to learn Spanish because I used to adore that language a lot. So I learned Spanish. So then you can choose accordingly. Is Nifty IT rally started?
What are you asking? In development. Do you plan to do more session in upcoming future on Web3? Definitely will do. It was just this thing that I was traveling a lot into the last few couple of weeks. I was not available, and even you guys were having a lot of events that were lined up. So I didn't want to mess it up. Otherwise, we'll keep doing a lot of sessions. Whatever session we'll probably do a poll on which you guys want to, uh, want to know more about, and we'll conduct a session about that only. Okay, what are the real world problems that Web3 can solve? There are a lot of them. We'll talk in the next session. Man, I'm 17-year-old and used to mine crypto on my PC. Now I'm thinking to become crypto analyst. Can you tell some steps how to become crypto analyst and what should I choose to in college? Dude. You are into the right direction, I must say. If you like being an analyst, that means there are two or few of the things that you need to start loving from now. One thing is numbers. Second thing is start looking for finance. Everywhere you should look for only numbers and numbers. Finance. पहले उसके लिए financial modeling. Basically, you need to do a CA course. Try looking out for this word called CPA or CFA. ये दो जो होते हैं ना, these are crypto analysts. Basically, CPA और CFA जो होते हैं, you'll get a job into a venture capital firm, which will be very well high paying job, and it doesn't matter. They don't care what your age or anything. If you have got good financial models and good knowledge of the analysis that you make, you'll probably earn in lakhs, starting from lakhs per month. Your next section. Let's see if possible next week. Yeah, start looking for CPA, CFA courses. Oh, nice. CFA final. Cool. Okay, chalo. So this is about it, guys. Ray, are you there? Please take over. Ray, can you hear me? Okay, Ray is not here. Okay. Please share my social handles. Okay, you can check it out. Yeah, thanks a lot for doing this, Vivek. Thanks, man. The pleasure is all mine. I am just sharing my Twitter handle over here, Anshuk Das. You can follow me here, or just type my name on this name as it is, Vivek Mehta with a double I and MEHAD. You will find only one Vivek Mehta on LinkedIn. That would be me. Okay. So LinkedIn, I've got a kind of a very beam down connection, but following. But you can follow me on Twitter. I am trying to be quite active over there. That's my handle, Mehta and more. Okay, thanks for joining in, guys, and thanks, Vivek. I think we can hopefully end it here, and we'll have more sessions Sure. next few Okay, weeks. guys, Yeah. thank you for listening and thank you for staying up with me up till this late. Thank you for your time. I'll see you soon, probably in the next session, if possible, next week. So, yes, this is me, Vivek Mehta, head of marketing, New Type Capital, signing off. Thank you.